hello. I am so happy first of all that we hit 1000 subscribers finally. It's been long overdue. बहुत टाइम से ये अटका पड़ा था 900 समथिंग पे, बट येस्टरडे फट 100-150 लोगों ने एकदम से सब्सक्राइब किया. सम वीडियो डिड दिस मैजिक, सो आई एम सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी. आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया. गुड बैड डजंट मैटर, जस्ट द फैक्ट यू गाइज आर एंगेजिंग, sharing your heart, sharing your opinions. I am grateful. Okay, so in today's video, winters are here and I love winter season. This is the season where you can actually go dewy because sweating का कोई scene है नहीं, तो आप जा सकते हो all out with the glow that you like. I know people love glowy dewy makeup, so in today's video I'm gonna just do that. And the first thing you should be doing if you want a glowy base, glowy makeup, is to moisturize. The skin prep is so important. First of all, I'm gonna put these eye patches from Swiss Beauty. Now to moisturize my face, I use this Kumkumadi tail from Blue Nectar, and oh my god, this really helped my base look dewy, glowy, all sorts of good thing that you want in your makeup. Moisturize मैंने already कर लिया था, so now before makeup I am using this product, this glow. You see, you need this sort of moisturization if you want your base to look dewy AF. Just put some oil that suits you. That's really important. आपको suit करता है, because face oils are not for everybody and this one doesn't break me out, so I use it. My lips are extremely sensitive, तो lip balms कोई ही suit करते हैं मुझे, and this one is a lip oil. It also moisturize your lips, so I really love this. Is my everyday thing. By this time I feel हमारा under eye भी हो ही गया है, so I'm just gonna remove this. Dry patches नहीं चाहिए हमको. Last video में when I was going out with my friend, I forgot to moisturize my face properly. That is why my base was looking very off that day. So that has helped me learn something about myself. So you're always learning. Doesn't matter if I'm teaching you, doesn't mean ki I am like I know it all. No, you never know it all. You're always figuring it out. A lot changes in your skin. Earlier I was a oily skin girl, now I'm dry skin. कभी मैं combination हो जाती हूँ. So you really need to understand your skin type and do your makeup as per that. एक अगर आपने makeup सीखा, उसी को आप बार बार उसी तरीके को apply कर रहे हो ना, it's not gonna work out. Using this L'Oreal to conceal my under eye. Avoid foundation this time. But you know what? I've noticed this concealer is not really suiting me. मैंने earlier video में बोला था that it's amazing, and yes it is. A lot of people talk about it, they love it, I love it too. Like the coverage and the texture, everything is so good. It's my skin, so for me Swiss Beauty works really well. But let's see, I'm testing it.
I'm gonna just take the blush of my choice, which is this coral one. मैं कितने भी brush ले लूँ, blush ले लूँ, I am always gravitating towards this coral and peachy pink. These two shades are mine. This one is from Love Earth, very pigmented. You can use your stippling brush. I have one and I might use one. Really depends. मूड के ऊपर डिपेंड होता है ना यार मेकअप तो. दिस ब्लश इज रियली नॉट मेकिंग माई कंसीलर जो मैंने नीचे लगाया उसको बिल्कुल भी नहीं शेक कर रहा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा वो अपनी जगह से. सो रियली गुड ब्लश. व्हेन यू पुट योर ब्लश इट शुड नॉट मूव योर बेस. लिक्विड प्रोडक्ट्स मोस्टली ये कर देते हैं. सो इट डिपेंड्स कि कौन सा ब्लश आप यूज़ कर रहे हो. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट पिगमेंट. देयर इज अ लॉट. थोड़ा ना मैं आइज पे भी लगा देती हूँ to make it look one. You should marry the product. It should not look यहाँ पर contour लगाए, यहाँ पर blush लगाए, यहाँ highlighter, यहाँ concealer. No, it should always look one. जब coverage डला है और कुछ दिख नहीं रहा, that's not flawless. Flawless is everything is one. Putting some on my nose. वो effect नहीं आता that cold हो रखा है. थोड़ा सा center में रख लो. We'll do some contouring. आपने वो तो देखा होगा जब लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, बट डोंट डू दैट. उससे ना फ्लॉलेस नहीं लगेगा आपका बेस. तो जस्ट टेक सम ऑन योर ब्रश, ऐसा टैप कर लो. एक्सेस काम लेके लगाओगे तो बिल्ड हो सकता है, बट ज़्यादा लग गया तो फिर उसको छुपाने के लिए और प्रोडक्ट फिर लेयर बढ़ती जाएगी. सो जस्ट कीप इट हियर अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स. थोड़ा ड्रूपी लगेगा फेस ऐसे करने पे. अ लिटिल बिट पुट इट डाउन. See, I'm not using a lot of product, loving my base in real and also in the camera. See how glowy and dewy my base look. I'm literally shining, but we cannot go out looking like this. You can, but makeup टिकेगा ही नहीं because आपने set ही नहीं किया. But जब set करोगे तो of course ये dewiness थोड़ी तो कम होगी, but हम इसको वापस ले आएंगे. How? Just wait. I'm gonna use this from Pack. थोड़ा सा एक्सेस हटाओ. अंडर आई सेट करना इज सो इम्पॉर्टेंट. डोंट वरी अबाउट कि ड्यूइनेस चला जाएगा. नो, डोंट वरी. ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ मैं. आई एम जस्ट यूजिंग टू सेट नॉट बेक. अंडर आई के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है, ज़्यादा पाउडर, बिकॉज आई नीड प्रॉपर सेटिंग देयर. अंडर आई क्रीज नहीं करना चाहिए. तो दैट एंड वट एवर इज लेफ्ट आई एम पुटिंग it all over my face. Okay, and just do this, not drag. Dab. Product लेना है, tap it, then put it on your face. Okay, इससे सेट भी होगा, ज़्यादा पाउडर भी यूज़ नहीं होगा. एंड यू सी ड्यूइनेस अभी भी है, बट फेस भी सेट हो गया है. सो दोनों काम हो गए हैं और ड्यूइनेस भी नहीं किया. अब वही अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया और पूरा फेस मैट हो जाता. इफ़ यू फील कि ये ज़्यादा मैट हो गया है, I don't feel like it, but if you think कि आपने पाउडर लगाया और फेस बहुत ज़्यादा मैट हो गया है, then take a dewy mist. This one is from Mars, Seal the Deal. ये इस पे लिखा नहीं है dewy, but it does make your base dewy. बहुत too much आपको लग रहा है that केकी हो रहा है या मैट हो रहा है, just take a mist, shake and spritz. It will instantly add the dewiness, okay, and will also set your base. Let it dry. Alright, so our base is complete. This is the base routine that you should follow. I am telling you, you're gonna get amazing compliments, and so many, because this looks so natural, dewy. It looks like your skin is so healthy. So that is the vibe that we are going for this winter. So yes, try this. But for the eye, I'm gonna make a different video which will come after this, the part 2, where I'm gonna do the eyes, because this video थोड़ी लंबी हो गई है. थोड़े मैंने इसमें टिप्स बताए हैं ज़्यादा करके. आई केप्ट इट डिटेल्ड, सो दैट इज़ वाई थोड़ी लंबी हो गई है. तो आई एम एंडिंग इट हियर, बट इसके बाद पार्ट 2 भी आ रहा है, वेयर आई विल बी शेयरिंग द आई लुक एज वेल, विच इज़ सो डिफरेंट, सो ईजी. यू विल हैव फन डूइंग दैट आई मेकअप, आई एम टेलिंग यू. So it doesn't require so much talent, okay? That's not what I'm doing here. I'm here to keep things real, natural,
very like everyday like yet glamorous. That's the vibe we are going for कि अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो तो you can apply it in real life and go about your day. Okay, that is what we are doing here. So this is the base. You can definitely try. If you try, let me know. Okay, comment what else you want me to do in my videos. I'm here to listen to you all and do exactly what you want. Okay, so that's all. I hope you liked. If you did, make sure you like, share, subscribe, and I shall see you in my next video, which is coming right after it.